Kumar Bharadwaj, psychologist. Today we will be discussing about interpersonal relationship of school children or student with their parents. First thing, that is relationship with parents will be important at present time, because at present time our moral values will be decline time to time, and a student will be aggressive or will be energetic or explore their behavior with the aggressive form in front of their parents, and so many distractions between their relations, and relationship will be breakdown. So this is the point. These points will be help you with better interpersonal relationship with your parents. First point will be spend time with their parents. Second point will be respect them. आपको उनका रेस्पेक्ट करना है एवरी सिचुएशंस में. स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स व्हेन यू आर फील फ्री. There is no one to have assigned by your teachers or by your observer supervisors. Then you will be free and spend time with their parents. This is the most valuable time of you and your parents, because both are to be feel very good or very positively. The third point will be have faith in them. आपको हर सिचुएशंस में उनके ऊपर विश्वास करना है, बिकॉज यूर पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. दे हैव द 30 years, 40 years, 35, 25 years of experience of their life and gain lot of positive and negative experiences. When you feel any difficulty in your life, then they will be help to solve the problems. Then how you will be solve that situation according to their parents experiences. The next point will be honest with their them. आपको उनके साथ ईमानदार रहना है. एवरी सिचुएशंस में अपने पेरेंट्स को आपको अपनी रियल बात बताना है, झूठ कभी नहीं बोलना. ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना पेरेंट्स आपके ऊपर बिलीव करेंगे और आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बेटर होगी. Next point will be stay calm with discussing. When your parents will be discussing any topic regarding their family matters, personal problems, any social problems, then you don't be interrupted. Be calm. After some time, when the situation will be normal and discussion will be end, then you will be discussing about that thing, what they are to be discussing, if they to be feel that that is important for you. Next, don't immediate overreact. Overreact आपको नहीं करना है. Present time में every student, because you are the teenagers or youngster, आप ओवररिएक्ट ज्यादा करते हैं हर सिचुएशन में. तो जितनी डिग्री ऑफ टेंडेंसी आपकी है रिएक्शंस की, उतनी आपको बैलेंस करनी है. ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना होता किसी भी सिचुएशंस में. इफ यू हैव ओवर रिएक्ट, देन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विल बी प्रॉब्लमेटिक एंड क्रिएट सम प्रॉब्लम बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट थिंग, डोंट डिफेंसिव. डिफेंसिव नहीं बनना है, आक्रामक आपको नहीं करना, बिकॉज in this age there are so many hormonal changes in your bodies, so many psychological changes, so many intellectual changes, so many physical changes also to be inculcated in your bodies or in your personality. So become attentive, aware about the change, take positive guideline by the supervisor about the change if you have any doubt. The next point will be avoid putting down your parents' ideas. आपको अपने जो पेरेंट्स के जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, उनको नीचे डालना, पीछे छोड़ने से आपको बचना. Because your parents have lot of experiences in life. So if they are to be saying something about the changes or positive or assertivity,
then you will be take care of them, believe in them, and respect to their idea. If you are to be respect to their parents' ideas, then your parents will be faith on you. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर विश्वास करेंगे यदि आप उनके आइडियाज का सम्मान करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट विल बी seek permissions for going out or staying out late. यदि आपको कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर आप जा रहे हैं, तो you will be take the permission from your parents. This action will be very very lovingly or create love in the heart of their parents. इससे क्या होता है, आपके पेरेंट्स के जो हार्ट है उसके अंदर आपके लिए प्रेम भावना, स्नेह भावना जागृत होती है, क्योंकि पेरेंट्स ये मानते हैं कि आवर चिल्ड्रन विल बी रिस्पॉन्सिव है और हमारा टेक केयर कर रहा है, जो हम उसको बोल रहे हैं वो उसका रिस्पेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट विल बी एट द लास्ट, दैट इज हेल्प देम इन रूटीन वर्क. रूटीन वर्क, आपका जो रूटीन का जो वर्क है, उस रूटीन के वर्क में आपको अपने पेरेंट्स की सहायता करनी है. बिकॉज इफ यू हैव टू बी और प्रिपेयर फॉर द हेल्प देम इन द रूटीन वर्क, देन योर पेरेंट्स फील वेरी गुड और वेरी वेरी रेस्पॉन्सिव. इन केस ऑफ व्हेन you have to be take the permissions, help them in the routine work, avoid putting down your parents' ideas. So all these points will be positive or regarding positivity followers to make the relationship better. These points will be help with all you to make the relationship, interpersonal relationship very very important or very very progressive in your life, or help them to be success. Because if we have to be our relationship strategy or our relationship efforts both are to be positive, then our relationship will be successful or our interpersonal relationship is very very well. Then we can improve it and help to progress the life or development. Thank you. Have a nice day.